and this is system software, especially OS, and this is application software on which user works. That way it says software serve as a bridge between hardware and user application. Okay, got this point? Mania, is this clear? Yes, sir. So one of the system software is basically translator, and that is related to the name of translator is compiler. One second. So basically compiler, what it does, it help you. What it does basically when we make a program, जब हम कोई programming language के अंदर अपना कोई program बनाते हैं, that must be converted into machine language. So translator convert that human language program into machine code. So one of the translator is compiler. Okay. So it says a compiler is a program that translates code from a high level language to machine code. वो प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्राम वो होता है जो बेसिकली हम किसी लैंग्वेज में राइट करते हैं. whatever program we write in language to solve the real life problem, so that is basically that must be converted into machine code. तो कंपाइलर जो है बेसिकली आपके होल सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है. तो मशीन कोड इज एक्सिक्यूटेड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म अस रिक्वायर्ड टास्क. अभी लास्ट टाइम जैसे आप लोगों ने, अगर आपको याद हो, हम सूडो कोड राइट कर रहे थे सम का प्रोग्राम. अगर मैं उसको किसी लैंग्वेज में राइट करता हूँ, that must be converted into machine code, and for that purpose I need to have a compiler or interpreter. Now the source code refer to the original high level program. जो प्रोग्राम आपने राइट किया होता है उसको हम कहते हैं सोर्स कोड, और वो प्रोग्राम जो मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है. आफ्टर कंपाइलेशन जो कोड प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड. कंपाइल्ड मशीन कोड कैन बी रीयूज विदाउट द नीड फॉर रीकंपाइलिंग. इट मीन कंपाइल कोड को हम बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा होता है. एक सेकेंड के लिए अजान हो रही है. Okay. Compiled machine code can be reused without the need for recompilation. It means कि आपका प्रोग्राम जो है वो फाइनल वर्जन में जब कन्वर्ट हो जाता है, दैट प्रोग्राम कैन बी गिवन टू एनीबडी टू रन अनदर मशीन. एग्जांपल ऑफ हाइलम क्या है? जावा है, पाइथन है, विजुअल बेसिक है. दीज आर सम लैंग्वेजेस which are used to perform coding tasks. जी क्या नाम है मूसा, आपको क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay. That compiler was basically translator, one of the category of system software. Second category is device driver. Device driver basically kind of software of any hardware component like mouse, keyboard,
printer, they are given CD drives. वो devices जो outside the system connect होती हैं CPU के साथ, they are called peripheral or IO devices. They need a software, and that software is called device driver. A device driver is software that allow hardware devices to communicate with the computer operating system. क्योंकि हार्डवेयर को recognize करना होता है, and then for recognition purpose you need to have software. That software is called device driver. So without अच्छा ये automatically क्या कहते हैं plug and play है, they are plug and play, automatically install हो जाते हैं. जब तक USB पोर्ट नहीं आई थी उससे पहले सीरियल पोर्ट पैरेलल पोर्ट होती थी. वी हैव टू इंस्टॉल, हमें इंस्टॉल करना पड़ता था हार्डवेयर, उसके साथ CD या फ्लॉपी डिस्क आती थी, उसके थ्रू हम इंस्टॉल करते थे. जैसे यहाँ लिखा विदाउट ड्राइवर हार्डवेयर डिवाइस कैन नॉट फंक्शन विद द कंप्यूटर. एवरी हार्डवेयर डिवाइस कनेक्टेड टू कंप्यूटर हैज एन एसोसिएटेड ड्राइवर, उसका अपना ड्राइवर होता है. तो व्हेन अ डिवाइस प्लग्ड इनटू USB पोर्ट द ऑपरेटिंग सर्चेस फॉर द करेक्ट ड्राइवर. इफ द एप्रोप्रिएट ड्राइवर इज नॉट फाउंड एन एरर मैसेज. तो आपको वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा कहीं से भी, इंटरनेट से या किसी और रिसोर्स से, उस हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग जिसको ऑपरेटिंग में रिकग्नाइज ना कर. ये माने ये पॉइंट क्लियर है आपको? Sir, could you repeat again, please? Okay. 1 second. Okay, Mani, can you go through this material? Then I further explain. Just go through. Sorry, sir. Okay, just go through. Then let me know where you are not understanding. Oh, sir, I don't like the general sort of. General mean basically, now listen. This is the software which is made for hardware. One thing. A device driver basically is a kind of software which is only made for particular hardware, like mouse. When you attach the mouse, it must be recognized by operating system. Okay, but how? Mouse will have own software to install in that system. Like you attach a printer with laptop or CPU. Okay, if you attach a laptop, so what will happen? How system can recognize? For recognition purpose, you need to have software, and that software is called device driver. You got my point? Yes, sir, I understand. Okay. Like they have given example like printer. If you attach printer with your CPU or laptop, it will not recognize if there is no software regarding printer. Okay. Memory sticks, mouse, CD drive, scanner, any kind of input output device you attach with the system, it must be recognized. I understand now, sir. Thank you. Okay. Now a linker, another kind of system software, which basically connect your source code, okay, with object code. जब हम सोर्स कोड राइट करते हैं ना, और जब हम उसको कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, तो कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं, बिल्ट इन फाइल्स होती हैं जिसको हम लाइब्रेरीज कहते हैं. बेसिकली दैट इज यू कैन से a kind of built-in function we need to have, which must be attached with your file. To attach that file,
Otherwise, that your file will not work, your program will not work. So you need to have library programs. Library program must be attached with your source code, and for link to attach library program with source code, we need to have a linker. A linker or link editor is a program that combines one or more object file into a single executable program. Basically, there are various files are used when we compile the program. But we need to have only single file. So before converting into object file, they must be a single file. There may be 2 files, 3 files. They should be treated as single file. For that purpose, we need to have a linker. So it works with object file produced by compiler. Sure. Yes. Could you explain what an object file is? अच्छा मैं बताता हूँ, एक सेकंड और। अच्छा, ऑब्जेक्ट फाइल बेसिकली होता ये है कि अगर आपको याद हो, ऑन ट्यूसडे हम एक सूडो कोड राइट कर रहे थे, लाइक सम ऑफ टू नंबर। अगर मैं उसको बेसिकली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ, सॉरी, वो प्रोग्राम जो मैं राइट कर रहा हूँ दैट इज द सोर्स प्रोग्राम, लेकिन सोर्स प्रोग्राम को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। नाउ सी दिस, मूसा आपको समझ में आ रही है? source program is made Yes. by source program is made by user on a language. ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप प्रोग्राम कोड राइट करते हैं दैट इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम. इट कुड नॉट अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, so it need translator like compiler. अब कंपाइलर जब चलता है तो वो इसको मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है. दिस इज ऑब्जेक्ट मींस बाइनरी फॉर्म काइंड ऑफ दैट, and that object program executed by CPU, otherwise it will not run. अच्छा, अब यहाँ पे लिंकर का काम क्या है? लिंकर क्या करता है? there is a library files, there is a library file का मतलब होता है बिल्ट इन फंक्शन. इसको इसके साथ अटैच करता है और इन दोनों को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करके फिर ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है. जैसे यहाँ लिखा है लिंकर इनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल. अब ये मॉड्यूल क्या है? सेपरेट पीस ऑफ कोड विच सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग बाय ब्रेकिंग टास्क इनटू मैनेजेबल सब टास्क. ठीक है, द लिंकर असेंबल ऑल द मॉड्यूल टुगेदर टू क्रिएट अ फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. अच्छा, प्रोग्रामिंग का बेसिकली होता है कि जैसे अगर आपको याद हो कि हमने सिर्फ 2 और 3 लाइन का कोड राइट किया था, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हमने बना के रखे होते हैं, उन सबको हमने कंबाइन करके चलाना होता है. तो लिंकर वर्क्स एट द टाइम. तो लिंकर क्या करता है कि जितने भी मॉड्यूल आपने बनाए हुए, मॉड्यूल मीन स्मॉल पीस ऑफ प्रोग्राम विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर प्रोग्राम और फाइल. तो लिंकर क्या करता है? उन तमाम मॉड्यूल को आपके प्रोग्राम से लिंक कर देता है. एंड देन कंपाइलर कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट कोड. ऑब्जेक्ट कोड इज अ मशीन कोड.
Yes, Manya, got it? Now you got it? Yes, sir. Thank you, sir. So object code will run on machine. Otherwise, you आपका जो सोर्स प्रोग्राम होता है ना वो ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर होता है. ह्यूमन लैंग्वेज कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड. इसीलिए हम ट्रांसलेटर को यूज करते हैं. ट्रांसलेटर जो है आपकी लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है. Now, another system software is utility program or software designed to perform specific tasks on a computer. इसकी best example है antivirus. Utility means satisfaction. अगर utility program ना हो, if there are no utility program in your system will not work smoothly. To run our computer system, either it is laptop, mobile, or PC, you need to have a utility program, especially antivirus or anti-spyware. These are two useful utility programs which make sure smooth functioning of your device like mobile, laptop, tablet, or PC. Okay, so there are various examples are given like antivirus, anti-spyware, file backup, disk repair and analysis, file management and compression, security tool, screensaver, disk defragmenting. These are some files or some software which make sure your system work properly. It says our software designed to perform a specific task. Now remember, it will perform only one task on a computer. They help manage, maintain, and control computer resources. So they work in the background. Okay, normally they work in the background. Like we only install antivirus. Antivirus works automatically to kill all viruses coming to the system. Same like anti-spyware, it will protect you to spy of your system. Spy means jasusi karna. Spyware, what does the spyware? It basically record all keys pressed by you and send to hacker. But anti-spyware works against spyware. वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, so that आप जो भी कीज प्रेस कर रहे हैं उसको ये हैकर तक नहीं जाने देगा. यस मूसा, गॉट इट? Yes, sir. इसमें कोई परेशानी? No. ओके ओके, मानी आप बताएं, इस यूटिलिटी प्रोग्राम इज क्लियर? Yes, sir. अब जो मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट इज ओएस, उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है. ओएस बेसिकली इज द मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर. सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है दैट इज ओएस. आपका लैपटॉप हो, आपका पीसी हो, आपका मोबाइल हो, ओएस सबसे पहले इंस्टॉल होता है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट ओएस इज अ प्लेटफॉर्म ऑन विच अदर सॉफ्टवेयर रन. द ओएस सॉफ्टवेयर रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. तो हार्डवेयर से जो हमारा कनेक्शन बिल्ड होता है इट इज डन बाय ओएस. हम जो भी कमांड देते हैं so basically OS provide a platform through which other software can run. OS basically kind of interface so that we can communicate with the hardware and software, other software. Okay, it manages essential function of the computer. So without OS, computer would be difficult and user unfriendly for most users. Obviously, if there is no OS, कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा. की फंक्शन ऑफ ओएस क्या है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं, यूजर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर लाइक विंडो ओएस, एरर हैंडलिंग, लोडिंग एंड रनिंग प्रोग्राम, managing security like user account, provision of user account, login password. These are all facility provided by OS. जी, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फंक्शन दिया है, ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. लाइक HCI मीन ह्यूमन इंटरफेस, जिसके थ्रू हम कमांड देते हैं, ठीक है. कमांड या तो हम टाइप करके दे सकते हैं या
ग्राफिकली क्लिक कर सकते हैं। दो तरह के आपके पास इन्वायरमेंट होते हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। OS provide the facility of multitasking. You can run many applications at a time, like you are working on MS Word for typing, you are browsing, you are searching the internet, you are listening the music. This is kind of multitasking. ठीक है, ओके। फिर है प्लेटफॉर्म पर रनिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो जब तक OS इंस्टॉल नहीं होगा, अदर सॉफ्टवेयर कुड नॉट रन। तो मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट, हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू हम लॉग इन होते हैं। मैनेजिंग फाइल का मतलब है कि फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं, फाइल आप डिलीट कर रहे हैं, फाइल आप क्लोज कर रहे हैं, फाइल आप ओपन कर रहे हैं, फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं एक पार्ट से एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन, या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। दीज आर ऑल मैनेजिंग फाइल। हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो जब हम कोई हार्डवेयर अटैच करते हैं, एक तो सिस्टम के अंदर हार्डवेयर उसको मैनेज करता है, और एक वो हार्डवेयर जो हम बाहर से अटैच करते हैं जिसको हम कहते हैं आईओ डिवाइसेस। ठीक है, और उसके लिए वो जो डिवाइस ड्राइवर होता है उनको रिकग्नाइज करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट की फर्दर डिटेल आएगी, यानी रैम को जितनी भी मेमोरी है, रैम है, रोम है, वर्चुअल मेमोरी है, कैशे मेमोरी है, उन सबको हैंडल करता है। इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन। इंटरप्ट का मतलब होता है कि एक सिग्नल जनरेट किया जाता है फॉर अ प्रोसेसर कि यूजर की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन आई है। सिक्योरिटी मैनेजेस लॉग ऑन पासवर्ड, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये सब वो फंक्शन है जो आगे डिटेल में आएंगे। Sir, should we write this? यू वांट टू राइट? नो नो, यू डू नॉट, आई विल सेंड यू। एक तो आपको Okay, वीडियो sir. मिल जाएगी, आपको मैं सेंड भी कर दूँ। ठीक है, Okay, sir. Thank you. अच्छा ये देखें, सबसे पहले HCI को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। इसके दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक CLI और एक GUI। CLI, आप लोगों ने लिनक्स का नाम सुना है? उसका आपने सुना है लिनक्स? जी मानिए, आपने नाम सुना है लिनक्स का? No, sir. Linux is basically kind of operating system which is run by multinational companies। यानी मल्टीनेशनल लेवल पे लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। नॉर्मली इसका एनवायरनमेंट क्या होता है? CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब होता है कि आपको जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है, यू हैव टू टाइप दैट कमांड। ठीक है, नॉर्मली जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहे होते हैं, जैसे विंडो बेस होता है, ये पूरा ग्राफिकल होता है, जैसे ये लिखा है GUI। ठीक है, तो आपके पास दो एनवायरनमेंट होंगे OS के अंदर, एक CLI और एक GUI। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है रिक्वायर यूजर टू टाइप इंस्ट्रक्शन टू सेलेक्ट ऑप्शन ओपन सॉफ्टवेयर। जैसे मैं सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो मुझे टाइप करके ओपन करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर क्लोज करना है तो मुझे टाइप करके क्लोज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को रीनेम फाइल को क्रिएट करना है, आई हैव टू टाइप। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूजर मस्ट लर्न मल्टीपल कमांड टू फॉर बेसिक ऑपरेशन, एग्जांपल सेविंग और लोडिंग फाइल। फाइल क्रिएट करनी है, मुझे टाइप करना पड़ेगा, फाइल रीनेम करनी है, आई हैव टू टाइप। इट कैन बी स्लो ड्यू टू द नीड फॉर फ्रीक्वेंट कमांड इनपुट। ये थोड़ा स्लो होता है क्योंकि आपको कमांड टाइप करनी होती है। इट वेट फॉर यू। एडवांटेज क्या है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर है, अलाउइंग फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी बियॉन्ड प्री डिटर्मिन ऑप्शन। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। इसीलिए लार्ज लेवल पे जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, दे यूज लिनक्स बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप अपनी मर्जी की कमांड जनरेट कर सकते हैं, एंड दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल GUI। तो नॉर्मली इंडिविजुअल या स्मॉल कंपनी जो होती हैं वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करती हैं, लाइक विंडोज। ठीक है, अलाउ इंटरेक्शन यूजिंग पिक्चर और सिंबल आइकन इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड। तो अभी जो, जैसे मैं ऑपरेटिंग जो भी आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज GUI। टैबलेट के अंदर भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज GUI। लैपटॉप में, PC में, एवरीवेयर नॉर्मली हम GUI ऑपरेटिंग यूज करते हैं बिकॉज दैट इज ईजी। यूजर कैन सेलेक्ट आइकन टू ओपन एप्लीकेशन विदाउट टाइपिंग। ठीक है, तो इसका सब
सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इजीली मैनेज कर लेते हैं। कॉमन टेक्नोलॉजी इंक्लूड विम, विंडोज, आइकन, मेन्यू एंड पॉइंटिंग डिवाइस। दैट इज वाई विंडो इज कॉल्ड विम। A mouse control a cursor for selecting icon and opening multiple windows simultaneously. So mouse can be used to control the windows. A window manager oversees interaction between windows, application, pointing devices, and cursor function. So there is another software given in operating system, that is window manager. CLI, मैंने आपको बताया ना कि CLI यूज होता है, जो लार्ज कंपनीज होती हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करती हैं। लिनक्स में विंडो भी होता है और CLI भी होता है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं CLI इन्वायरमेंट। यानी लिनक्स में आपको GI इन्वायरमेंट मिलेगा और CLI इन्वायरमेंट भी मिलेगा। मैं आपको शो करता हूँ ये किस तरह का होता है। यहाँ पे नहीं, एक सेकंड में दिखाता हूँ। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये देखें, ये CLI इन्वायरमेंट है। दिस इज द काइंड ऑफ CLI इन्वायरमेंट। यहाँ पे एवरी कमांड आपको टाइप करनी पड़ती है, ठीक है। पहले होता था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम लोग 20 ईयर्स बैक यूज किया करते थे। विंडो आने से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे वो टेक्स्ट बेस्ड था। CLI का मतलब टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एवरी कमांड यू हैव टू टाइप, यानी कुछ भी ग्राफिकल नहीं है। ये तो विंडोज आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम इजी हो गया, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम को जो लर्निंग पीरियड होता था वो 6 मंथ होता था, क्योंकि आपको एवरी कमांड मेमोराइज करनी पड़ती थी विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। जितने भी लार्ज कंपनीज हैं दे यूज लिनक्स। लिनक्स में दोनों एनवायरनमेंट अवेलेबल है, GUI भी है और CLI भी। बट नॉर्मली उसके जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्पेशलिस्ट होते हैं, दे यूज लिनक्स एज ए CLI इन्वायरमेंट। आपको ये इन्वायरमेंट मिलेगा। ये देखें, यहाँ पे आपको कमांड टाइप करनी होती है। ये C ड्राइव है, यूजर्स फोल्डर का नाम है, और ये भी कुछ फोल्डर का नाम है। यहाँ पे आपको कमांड टाइप करनी पड़ती है। पॉइंट क्लियर? दिस इज अ CLI इन्वायरमेंट। यू हैव टू टाइप कमांड, लाइक देखें, इसने DI कहते हैं डायरेक्टरी। कितने फोल्डर है सब शो हो जाएंगे। तो यू हैव टू वर्क विद टाइपिंग। पूरा एनवायरनमेंट आपको टाइपिंग का मिलेगा, कोई भी GUI नहीं है। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. ओके। मॉडर्न डिवाइसेस पीछे दिया हुआ है कि मॉडर्न डिवाइसेस, मोबाइल फोन एंड टैबलेट इंक्रीजिंगली यूज टच स्क्रीन फॉर पोस्ट वेब इंटरेक्शन। पोस्ट वेब में टच आ गया ना, वेब के अंदर टच नहीं है। पोस्ट वेब का मतलब है टच, तो आपको डायलॉग बेस्ड एनवायरनमेंट आ गया। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ GUI, अलाउ इंटरेक्शन यूजिंग पिक्चर और सिंबल आइकन इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। हम नॉर्मली जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं दैट इज अ GUI। The user can select icon to open application without typing. These are the feature of GUI. Common technology include web, Windows, icon, menu and pointing devices. अब माउस का ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। तो अब यहाँ पे दिया यूजर कैन परफॉर्म एक्शन लाइक पिंचिंग एंड रोटेटिंग विच आर डिफिकल्ट विद अ माउस पॉइंटर। तो मॉडर्न डिवाइसेस के अंदर ये आपको डायलॉग बेस्ड भी आ गया है, डायलॉग बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या टच सिस्टम आ गया है, इससे पहले नहीं था। इससे इसको हम कहते हैं पोस्ट वेब। जी, यहाँ इस स्लाइड पर जो कंटेंट है, इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन हियर? No, sir. It's clear. ओके।
ओके, यहाँ पे फर्दर डिस्क्रिप्शन दी हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम आर एसेंशियल सॉफ्टवेयर दैट इनेबल कंप्यूटर सिस्टम टू फंक्शन करेक्टली एंड फैसिलिटेट यूजर इंटरेक्शन। तो ये इसका मेन फंक्शन राइट करते हैं। दे प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशन टू रन, a usable interface between human and computer। इंटरफेस का मतलब है या तो CLI होगा या GUI होगा। What it does, operating system simplify the complexity of both software and hardware। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर करता है कि यूजर की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो अप करे, सॉफ्टवेयर को ओपन करे, उसको मेमोरी एलोकेट करे, ठीक है, हार्डवेयर मैनेजमेंट में आपका हेल्प आउट करेगा। अब जैसे दिया हुआ कॉमन एग्जांपल इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैक, अच्छा एग्जांपल दी हुई गूगल एंड्रॉयड, एप्पल iOS primarily for tablet and smartphone, ठीक है। These are some operating system example। Operating system are typically is stored on hard disk, क्योंकि इंस्टॉल होता है सबसे पहले OS ही हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। आपकी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होगा या SSD में इंस्टॉल हो जाता है। सॉलिड स्टेट डिवाइस फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट ड्यू टू लिमिटेशन। तो नॉर्मली मोबाइल फोन के अंदर आपके पास सॉलिड स्टेट डिवाइस के, इसको हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मिस कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो 128 GB या 256 GB जो स्टोरेज होती है वो रॉम होती है। दैट इज नॉट अ रॉम, दैट इज अ बेसिकली फ्लैश ड्राइव वेयर यू कैन रीड और राइट। रॉम का मतलब होता है कि आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। और रीड राइट का मतलब ये फ्लैश मेमोरी आपको ऑप्शन दोनों देती है, यू कैन राइट, यू कैन रीड। जो मोबाइल की इंटरनल मेमोरी होती है जैसे 128, 256 या 512, दैट इज अ फ्लैश मेमोरी, नॉट अ रॉम। दिस पॉइंट इज क्लियर। इस स्लाइड पे के ऊपर इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस स्लाइड? No confusion, sir. ओके, मूसा आपको कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ CLI का और GUI का। जस्ट गो थ्रू इन 2 minutes and you can discuss me if you have any problem। ओके, आप लोगों ने रीड कर लिया? हैव यू गॉन थ्रू? Yes, sir. इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. गुड। मूसा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस comparison of OS? No, sir. अच्छा, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दी हुई CLI की और GUI की सेपरेटली। CLI क्या होता है? यूज बाय प्रोग्रामर, एनालिस्ट और टेक्नीशियन। मैंने आपको बताया था जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, दे यूज CLI environment। तो लिनक्स इज अ very much secure operating system normally used by multinational to control the networks। ऑपरेटिंग का बेसिक पर्पज होता है कि एक इंडिविजुअल सिस्टम को कंट्रोल करना है, बट अदर एंड में पूरे नेटवर्क को भी OS ही कंट्रोल कर रहा होता है, और उसके लिए सबसे बेस्ट है लिनक्स और यूनिक्स। आइडियल फॉर दोज नीडिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर, ठीक है।
जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं हार्डवेयर के साथ, उसके लिए ये CLI इज द बेस्ट ऑप्शन. कॉमन टास्क इंक्लूड डेवलपिंग न्यू सॉफ्टवेयर, locating and removing errors, initiating memory dumps, capturing the content of computer memory. अगर आपने मेमोरी के कंटेंट को कैप्चर करना है तो फिर आपको CLI यूज करना पड़ेगा, बिकॉज GUI इज वेरी लिमिटेड. GUI में जो ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, you have to follow that, otherwise you could not do any task. Designed for the end user who may lack technical knowledge. जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो GUI यूज करता है, जिसको टेक्निकल नॉलेज है that person use CLI. So suitable for individual using computer for running software, playing game, storing and manipulating photograph. इस तरह के यूजर के लिए कहता है GUI बेस्ट है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली उसको मैनेज करना यूज करना चाह रहे हैं देन यूज CLI बेस्ड एनवायरनमेंट. ठीक है. यहाँ तक क्लियर. Yes, sir. Now this is one of the function done by operating system. यहाँ पे लिखा हुआ है memory management perform the following function. So memory management itself is a function handled by operating system. अच्छा, manages primary storage and facilitate data movement between RAM and hard disk during program execution. मानिए, do you know about RAM? आपको RAM के बारे में पता है? Yes, sir. What is the purpose of RAM? RAM is for basically it's random access memory. Okay, what it does? What is the benefit of having RAM? In this, whatever is like stored it can be altered. Okay, It's like basically but however for RAM it can for ROM it can't. yes, ROM could not. CLI used by multinational companies. As I told you, Linux is one of the best operating system in the world. Linux have two environments, GUI and CLI. CLI कोई specific use नहीं है, anybody can use, but it depend on your requirement. ठीक है. अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ what happen कि basically RAM is a random access memory which hold data, instruction, current instruction and current program. ठीक. अच्छा, ये मैं बना रहा हूँ, ये CPU है, स्पेस कम पड़ जाएगी. फर्ज कर लें कि मैं यहाँ पे CPU बना देता हूँ. दिस इज द CPU connected with RAM. Okay. This is RAM. यहाँ पे इनपुट डिवाइस होती है. दिस इज इनपुट डिवाइस विद डेट एंड डेटेड RAM. और यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होती है. तो सबसे पहले जब सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो जाता है, यानी इट इज ओपन, तो रैम में जो सबसे पहले स्पेस कवर अप करता है ना, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ये आपकी हार्ड डिस्क, आजकल हार्ड डिस्क है या सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, ये कनेक्ट होती है रैम के साथ. देखिए कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश है. हम जब कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे या कोई फाइल ओपन करेंगे, दैट विल ओपन इनटू रैम. इसीलिए जैसे मैं MS वर्ड ओपन किया, नाउ मैं डेटा टाइप करता हूँ, दैट डेटा गोज इनटू रैम. ठीक है. अब मैं कोई और एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा, कोई और एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा, कोई और एप्लीकेशन ओपन करता है, ये एक वक्त आता है रैम फुल हो जाती है. हाउ इट डिपेंड ऑन यूजर कि वो कितनी एप्लीकेशन ओपन करता है, कितनी एट अ टाइम काम करता है, बट रैम बिकम फुल. द पर्पज ऑफ रैम इज टू होल्ड डेटा, current instruction and current data and current program. Okay, this is the purpose of RAM. ये पॉइंट क्लियर है कि मेमोरी मैनेजमेंट. अच्छा, अब आ जाते हैं मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये है कीप ट्रैक ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशन. जैसे रोम है, रैम है या वर्चुअल मेमोरी है,
these are all kind of memory. अब यहाँ पे लिखा हुआ कीप ट्रैक ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशन. जब ये रैम है, जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, इट ओपन इनटू रैम, इसकी स्पेस, इसका अपना एक एड्रेस क्रिएट हो जाता है. यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन है, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन, और एक एरिया तो ओएस पहले से ही कवर अप कर चुका होता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट के अगर कोई एप्लीकेशन ओपन हो रही है तो उसको स्पेस प्रोवाइड की जाएगी, एंड इट इज डन बाय ओएस इनटू रैम. Execute memory production to prevent competing application from accessing the same memory location simultaneously. देखिए, अब एक प्रोग्राम ये ओपन है, दूसरा ये ओपन है, तीसरा ये ओपन है, चौथा ये ओपन है, 4 प्रोग्राम ओपन है रैम के, हर एक का अपना एड्रेस होगा, ये ओवरलैप नहीं करेंगे. तो दिस इज मेक श्योर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. यू गॉट माय पॉइंट? तो देखिए ना, यहाँ पे इसने इश्यूज लिखे हुए हैं. Without memory management, the following issues may arise: data loss due to overlapping memory usage, incorrect application result caused by accessing wrong data in memory, security risk if sensitive data is placed in incorrect memory, making it accessible to unauthorized software. In extreme cases, the computer could crash. अगर मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होगी तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा. ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर कि मेमोरी मैनेजमेंट परफॉर्म हो. ओके, ये माने ये पॉइंट क्लियर है आपको जो फ्लैश हो रहे हैं स्लाइड पे रिगार्डिंग मेमोरी मैनेजमेंट? Yes, sir. It's clear. Yes, clear. Good. Give me 1 minute. Now go through this one, security management. I'm joining in 1 minute. जी पढ़ लिया आप लोगों ने? सिक्योरिटी मैनेजमेंट. Sir, I'm on the second last one. ओके, दूसरा आपने पढ़ लिया? Sir, I'm done reading. ओके, एनी कंफ्यूजन इन दिस मटेरियल? No, sir. मूसा आप बताएं. यस मूसा, Yes, sir. इज दिस क्लियर? सिक्योरिटी मैनेजमेंट. Yes, sir. नाउ हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट. ठीक है, hardware peripheral means input output devices. So when you attach hardware with CPU, so it control its function.
Just go through this one. Okay, have you done? Yes, sir. Any confusion in this slide? Hardware peripheral management. Sir, the third, I don't understand the third point. Which one? This ensure, this one? Yes, sir. Okay. It says ensure each hardware resources has a priority for efficient usage and release. Okay, basically every hardware devices need memory. So it makes sure that जैसे हम प्रिंटर की इन्होंने एग्जांपल दी प्रिंटर की ना to send a job to a printer if job is small यानी 1 page 2 page तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी कि उसको पहले प्रिंट कर दिया जाए. Like it says, manage input output device by controlling queue and buffer. Buffer is called small memory area. Okay, so when you send a job document to print, it is stored in a buffer, and from buffer it goes into printer. It's a you can say buffer जो है ना ये printer की memory हो यहाँ पे होल्ड हो जाता है पेपर तो क्यू पे लग जाता है. आप इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि भाई अगर स्मॉल वन डॉक्यूमेंट पहले आ रहा है उसको पहले प्रिंट करने दूसरी जॉब को रोक के लॉन्गर जॉब को रोक के जो स्मॉल जॉब है उसको आपने पहले प्रिंट करना. ठीक है, इस तरह आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो या सीनियर Yes, sir. सीनियर मैनेजर की जॉब पहले आ गई है बाद में आ गई है और जूनियर ने पहले भेजी है तो आप सीनियर को पहले प्रायोरिटी दें. तो ये पूरी सेटिंग आप कर सकते हैं प्रिंटर मैनेजमेंट के अंदर. यू कैन डू. ठीक है. Okay, thank you, sir. Okay, so see you next on Tuesday. I will send you. All right, sir. I will send you video of the previous lecture. You are in group account. आप group account में है ना? जी सर मैं हूँ. Okay, तो मैं आपको send कर दूँगा. ठीक है. So you can see the video Ask- last. Anything you want to ask? All right. जी सर वो अगर गूगल क्लासरूम का कोई कोड है तो वो कैन यू सेंड इट टू मी. Google Class. जी. नहीं, मैं तो इसी पे लेता Zoom पे. Okay, sir. I just हमारे wanted to ask if there is a class, if there is a Google Classroom. I just No, no. want to join it. basically I take class on Zoom only ना. So we have class on Okay. Tuesday, Wednesday and Thursday. आप कल नहीं आई थी ना? जी सर मैं कल नहीं आई थी.
कल हमने वो बेसिकली सुडोकोड ही किया था। केस ऑफ किया हुआ आपने पहले? नहीं, I'm not sure, sir. I सुडोकोड don't think I've done it. तो अभी आपने शुरू किया है ना? अभी राइट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जी. पर मैं वीडियो फर्दर सेंड कर दूंगा आपको, प्रीवियस वीडियो, ताकि उससे आपको आइडिया गेट हो जाएगा व्हाट इज गोइंग ऑन। Okay, thank you, sir. ओके, Allah सी यू, Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।